ओके गाइस, मुझे जहाँ तक लग रहा है वी आर स्ट्रीमिंग राइट नाउ। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं शॉमी का ये 3 मिनट रह गए हैं तो लाइव इवेंट करने वाला हूँ, रिकॉर्ड एकदम बिल्कुल आपने सही समझा। और मेरे को बताओ ये लाइव स्ट्रीमिंग चल पड़ी है। आई एम डूइंग इट फ्रॉम ओबीएस ताकि मैं आपको शॉमी की मेन इवेंट की दिखा पाऊँ सही से। तो मेरे को बता दो यार। आवाज वगैरह आ रही है सही? एवरीबॉडी कैन यू लिसन? ओके, तो दो बंदे देख रहे हैं इस वक्त। तो दो बंदे देख रहे हैं। मेरे को बताओ आवाज आ रही है क्या आप सबको? मुझे आवाज का बताना जरा। मुझे आवाज का बताना जरा। ओके, आवाज तो आ रही है। So 2 people are watching right now and 4 people are watching. Let me readjust this timeline. I have to give this a name. But how can I change the name actually? Uh, लाइक तो आ गया है बट नाम नहीं चेंज हो पाएगा आई थिंक। नाम का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। Hmm, मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि ये संडे नाइट लाइव नहीं है। ये रेडमी नोट 5 लॉन्च है एक्चुअली। सो एवरीबॉडी नमस्कार, मैं हूँ अमन, आप देख रहे हो चेक स्वामी। बट ये लाइव लॉन्च दिखाने वाला हूँ मैं इस वक्त। हाय उपासना जी, हाय हर्ष, हाय उपासना, हाय प्रदीप, हाय तुषार। आई एम थिंकिंग यार मैं इस लाइव को बंद करके अगेन फिर से खोलूं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे नाम कुछ और आ रहा है। ऑल चेंजेस सेव्ड। स्ट्रीम की हेल्थ थोड़ी कम दिखा रहे हैं। सो लेट मी सो यू कैन चेक आउट मैं जो कर रहा हूँ अभी। हाय सकार भाई, हो गया नेम चेंज? हो गया नेम चेंज? लेट मी चेक इट अगेन। रेडमी नोट 5 लॉन्च, ठीक है यार, सबको पता चल जाएगा अब। uh, इरफान भाई आप नहीं आ रहे। भाई हर्ष, मैं नहीं आऊंगा एक्चुअली। मैं जरूर से साथ में बातें करने की कोशिश करूंगा। या ताकि रेड आपको लॉन्च दिखाना है एक्चुअली, तो लॉन्च आप देख लेना, साथ साथ में मैं बीच में बोलता रहूंगा। हाय सतीश। आई थिंक ओके, तो यहाँ पे लॉन्च शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे अभी एक्चुअली आ रहा था कि लॉन्च जो है वो आने लगा है। तो यहाँ पे अगेन अब कह रहे हैं कि 6 मिनट्स। सो लेट्स चेक इट इन अनदर विंडो कि इनका शुरू हुआ है कि नहीं। अभी वेटिंग चल रही है। अभी वेटिंग है गाइस, ये देखिए अभी वेटिंग चल रही है एक्चुअली। ओके, तो अब ये जब शुरू होगा तो मजा आ जाएगा। लव यू टू, अभी मत दियो। ये लाइव शुरू हो गया गाइस। हाय एमडी, हाय सरकार। संडे लाइव क्यों है भाई? मैंने नाम चेंज कर दिया है। लॉन्च स्टार्ट कब होगा? लॉन्च भाई स्टार्ट होने वाला है जस्ट। ये लाइव आ रहा है, नीचे देखिए। ये देखिए 2018 मी प्रोडक्ट लॉन्च, गिव मी 5। तो ये लाइव शुरू हो गया है। 12 बज गए, बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो गया। ओके, ये देखिए 5 की ऐड आ रही है अभी। यस, लॉन्च स्टार्ट। बिल्कुल उपासना जी, आज मैं बिल्कुल आराम से बैठ के लॉन्च को देखूंगा।
मैं कभी लॉन्च को पूरा देखता नहीं हूँ, बट आज मैं देखूंगा क्योंकि इट्स अबाउट Redmi Note 5 तो पूरा देखना बनता है। भाई मस्त म्यूजिक है यार। शरण मैं आपको बता दूं आज कॉपीराइट भी आ सकता है क्योंकि म्यूजिक बहुत चल रहा है एंड Xiaomi है तो बिल्कुल बिल्कुल कॉपीराइट आ सकता है। अभी चलो म्यूजिक को थोड़ा सा स्लो करता हूँ, पता नहीं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। लेट मी चेक यहाँ से। म्यूजिक बिल्कुल कम हो सकता है, म्यूजिक को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके अभी शुरू नहीं हुआ है लॉन्च एग्जैक्टली, तो वेट करना पड़ेगा। हैप्पी पेरेंट्स डे अभिमन्यु, हैप्पी पेरेंट्स डे और सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे भी। और क्या है क्विक फन ऐसा है, लॉन्च है Redmi Note 5 का। एक्साइटेड मैं भी बहुत ज्यादा। सतीश या ब्रो या 33 वॉचिंग, क्या बात है। 41 भैया जो देख रहा है यार इस वक्त पहले जल्दी से यार लाइक मारो, ठीक है। Redmi Note 5 के लिए लाइक मारो और मैं तुम्हें लाइव दिखाने लगा हूँ वीडियो, उसके लिए लाइक मारो। जल्दी जल्दी लाइक मार दो यार, जल्दी लाइक करो, वीडियो लाइक करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी जल्दी। Redmi Note गोइंग टू लॉन्च, तो जल्दी से लाइक मारो जी। वेदांत भाई ये लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं? भाई मैं कर रहा हूँ OBS स्टूडियो से यार। उदित कह रहे हैं हेलो भाई, हेलो भाई, समझा नहीं भाई। Redmi Note 5 का यार लॉन्च है इस वक्त। हैप्पी वैलेंटाइंस डे सबको, आपको भी खान साहब। अनबॉक्सिंग सुदर्शन, क्या प्रॉब्लम है? अभी तो हमें नहीं मिला है डिवाइस। आई लव यू टू अभिमन्यु। अभिषेक गुप्ता पहले मेरा नाम बोलो भाई। अभिषेक गुप्ता जी आपका नाम ले लिया जी। सौम्या कर दिया भाई लाइक, थैंक यू यार। Note 5 में स्नैपड्रैगन का कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है? Note 5 में यार मोस्ट प्रोबेबली 625 या 626 हो सकता है और Note 5 Pro में 636। उपासना ने लाइक कर दिया, थैंक यू भाई। मैं लाइक पहले ही करता हूँ, थैंक यू भाई। Mi 1 और Note 5 Pro का वीडियो बनाना, ठीक है जी बिल्कुल। हाय भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ जयेश जी, आप बताइए। मोरिया कह रहे हैं शायद लाइक कर देता, थैंक यू यार। माइक ले लिया मैंने, क्या बात है भाई, बढ़िया है। मेरा नाम बोलो भाई, ओके। मौर्या एंटरप्राइजेस, अभिषेक गुप्ता थैंक्स, लाइक कर दिया, थैंक्स अ लॉट। सरकार लव यू टू ब्रो। ओके 50 वॉचिंग, क्या बात है, लाइक बढ़ाओ यार बस। ओके ओके। हाय हरिओम सिंह, हाय उत्सव, हाय। मेरा नाम लो, हरिओम आपका ने नाम ले लिया। लेट मी चेक वन थिंग, वेट करना जरा एक मिनट। आज शर्मा जी लाइव नहीं आए, क्या बात है? यार एक चीज देखनी है जल्दी से, लाइव कब तक शुरू होगा? एक मिनट, मैं यहाँ से एक मिनट चेक कर लूँ जरा। ओके तो जो मैं करूंगा आज स्क्रीन के ऊपर आज आपको सब कुछ दिखने वाला है, ठीक है ना? तो अभी तक तो शुरू नहीं हुआ। 8300 पीपल देख रहे हैं। शुरू कब करेंगे ये तो रहस्य हो गया भाई साहब। चलो मैं आपके क्वेश्चंस जल्दी जल्दी देखूं, आप क्या पूछ रहे हो क्यों नहीं। स्टे ट्यून्ड। तो मेरा वाईफाई यार पता नहीं एकदम से क्या हो गया है, यूट्यूब सही चल नहीं रहा है मेरा एक्चुअली। मुझे आपके क्वेश्चन एक मिनट फिर से देखने पड़ेंगे। लेट मी रीओपन माय यूट्यूब ऐप। ओके ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है। 43, अच्छा आप चलो अब जल्दी से मैं आपके देखता हूँ। जी सारे कह रहे हैं कि ओके ओके। हाय उत्सव आर्या, हरिओम आपका नाम ले लिया। अनबॉक्सिंग वीडियो Note 5 Pro भाई शायद आप मिल पाए अनबॉक्सिंग, बट मैं ओपिनियन जरूर दूंगा। आसिफ गुड ब्रो, थैंक यू भाई। इंडियन है, ऑलवेज लेट से होता है सब कुछ। एमडी शकील मैंने भी लाइक कर दिया, थैंक यू जी। संदीप हाय। ऐप नर्ड इजंट इट स्टार्टेड डेट? नहीं जी अभी नहीं हुआ यार, मैं भी वेट कर रहा हूँ कब होगा कब नहीं।
हरिओम सिंह थैंक्स, अरे कोई बात नहीं जी। धीरज झा हाय, सरकार शर्मा जी भी लाइव है भाई, मेरे को दिखे नहीं यार। सुदर्शन घोष सर अनबॉक्सिंग वीडियो भाई मुश्किल है यार। अभिषेक गुप्ता शर्मा जी अनबॉक्सिंग करेंगे डायरेक्ट लग रहा है। कम ऑन प्लीज, इंडिया इज वेटिंग फॉर यू डेफिनेटली। अभिमन्यु आई एम सो एक्साइटेड, मी टू। वीराम हाय ब्रो, हेलो। तुषार रेडमी नोट 5 में 625 आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं भी यार। बाकी देखते हैं अगर शायद कुछ डिफरेंट हो आज लॉन्च में पता चल जाएगा। आप बेस्ट हो, अरे कोई बात नहीं यार, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बट मैं बस अगर आपको पसंद हूँ तो अच्छी बात है। आई एम सो एक्साइटेड। उपासना जी मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हार्ट्यूड हाय। किरण प्राइस क्या होगी? प्राइस यार 11,000 से जाने वाली, 9,000 से जाने वाली है 14,000 तक। कूल ब्रो थैंक्स, अरे कोई बात नहीं। शेखर पटेल हाय। राहुल हाय भाई, स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। अभिषेक शर्मा जी लाइव है, चेक करो भाई, मेरे को दिखा ही नहीं है। नोट 5 प्रो इज गुड, यस। हाउ मच टाइम इट टेक्स, देखते हैं भाई, अभी तक तो दिखा नहीं है। जी मेरे को शर्मा जी का भी दिख गया कि लाइव आ गए हैं, यहाँ पे आ गई, आपको भी दिख गया होगा नोटिफिकेशन। ब्रो मी नोट 5 प्रो का वीडियो बनाना, बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी आ गए, 1000 लाइक तो बनता है यार। अरे देखते हैं आज टेक। हाय हाय डिक्री, हाय ब्रो, हाय हाय। सेल कब है ये तो आज पता चलेगा जी। शर्मा जी का मैं भी एक बार चेक करूँ जी, शर्मा जी लाइव क्या कर रहे हैं अभी, देखते हैं। और शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी लाइव, शर्मा जी भी लाइव यही चला के बैठे हैं जो कि मैं चला के बैठा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी नहीं चला यार अभी लाइव। बट शर्मा जी का ये है, तो शर्मा जी को 8500 लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो ये एक गजब की बात है। मेरे को अभी 35 देख रहे हैं, देखते हैं और जाने कब आते हैं कब नहीं। तो हाय आजटेक, हाय टेक गिरी, हाय सुजीत। हरिओम मेरा नाम नहीं ले रहे हो? हरिओम सिंह मैंने आपका नाम ले लिया भाई। अवीन गुप्ता हुए कितना टाइम लगेगा पता नहीं यार अवीन, मैं भी वेट कर रहा हूँ, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। काशदीप और शर्मा जी पर भी नहीं शुरू हुआ भाई, एक ही टाइम पर शुरू होगा अलग अलग नहीं। हरिओम अनलाइक यार, हरिओम मेरी गलती नहीं है, मैं क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है एक्चुअली, बहुत सारे आ रहे हैं। मैंने आपका नाम ले लिया भाई हरिओम। प्रीतम दास गुड आफ्टरनून ब्रो, गुड आफ्टरनून जी। विक्की स्वीट हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप विक्की। अभिषेक गुप्ता मी टीवी भी आने वाला है, बिल्कुल मी टीवी भी आने वाला है जी। मेरे हिसाब से यार सबको जो नाम दिख रहा है वो है कि संडे लाइव, जबकि मैंने रेडमी नोट 5 कर दिया है, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। यस हरिओम। कॉमेडी किंग्स प्रोग्रेस होगी भाई, चिंता मत करो। थैंक यू भाई, कोई बात नहीं, हम चिंता करते ही नहीं है। और यहाँ पे लाइव का इवेंट जो है वो शुरू हो गया है, और यहाँ पे क्वालिटी को हम इंक्रीज करके 1080 भी कर देते हैं, आपको अच्छी लगे ताकि। और बिल्कुल बिल्कुल Xiaomi का यहाँ पे इवेंट शुरू हो चुका है, तो थोड़ी सी आवाज को बढ़ाते हैं हम यहाँ से। ये थोड़ी सी आवाज को बढ़ाया मैंने, अभी देखते हैं क्या होता है। हाय ब्रदर, आई एम दीपक डीजे, या ब्रो आई नो दीपक। सुजीत हाउ आर यू? आई एम गुड यार, आप बताइए आप कैसे हो? ये पप्पी बड़ा सुंदर है आपकी फोटो में। आकाशदीप स्टार्टेड, बिल्कुल सर। अनबॉक्सिंग वीडियो कब बनाओगे भाई? फोन मिलने पर। जल्दी लाइक करो यार, वीराम कह रहे हैं, बिल्कुल सारे लाइक कर दो। पहले 42 देख रहे थे, हाँ जी पहले 42 देख रहे थे, अब 28 रह गए क्योंकि शुरू नहीं हो रहा था, अब शुरू हो गया है। और शायद आधे लोग शर्मा जी के पास भाग गए हैं। अवीन आ गया, हाँ जी हाँ जी। अभिषेक गुप्ता हो गई फाइनली जी। आरट्यूड हाँ ब्रो, कब होगा? हो गया शुरू। आपको क्या लगता है मी टीवी का प्राइस क्या होगा? देखते हैं भाई प्रीतम, इसके बारे में मैंने अभी नहीं पढ़ा। कपिल ओके डैड पूछ रहे, बट लाइव अभी लेट है। लाइव शुरू हो गया डैड। ब्रो एज यूजुअल यू आर द बेस्ट, थैंक यू जी। टेकगिरी स्टार्ट हो गया, 500 लाइक तो बनता है, बस करवा दो जितने करवा सकते हो भाई। भाई आपका लाइव मस्ट है सबके लाइव से, थैंक यू भाई। सुदर्शन कब फोन मिलेगा? यार ये तो पता नहीं है यार, Xiaomi वालों ने बताया ही नहीं अभी। अवीन गुप्ता 5-4 हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीबॉडी। उपासना लाइव लॉन्च स्टार्ट जी। ओके सुनिए अब। Sitting here and to more than a million me fans who are watching us live right now. This is probably one of the biggest ever launch event live stream. ओके सुनिए And अब। I'm so glad that I don't have a single Valentine, but have so many millions of Valentines. And also so happy that you guys have
decided ये to सर spend जी the का special day आवाज with आप us. सबको So आ रही thank है you जो so much, सर बोल guys. रहे हैं? My name is Manu Jain. I'm a global VP with the firm, and I head Xiaomi's business in India. अभिषेक उन्होंने बंद कर दी Let होगी me यार। start by sharing a really great news, which is Xiaomi has become the fourth largest smartphone brand in the world. मीर And that too in is a better than market which is iPhone into declining year on year. गुरफत ये कह रहे हैं हेलो भाई हेलो। आई एम connected from शर्मा जी, क्या बात Thank है? you. रोहित If you यस look ब्रो at all the brands, आ रहा they've है, seen a बढ़िया decline शेखर यस। over from चलो सुनो भाई 2016 अब to सब 2017. And Xiaomi is the क्या only बात है। brand which has Xiaomi been growing at नंबर 4 पे है 97% स्मार्टफोन इस year वक्त on year. वर्ल्ड में। And of क्या course, if you look at our बात है। India business, पहले नंबर पे we एप्पल, दूसरे पे continue to remain सैमसंग, the तीसरे number पे one हुआवे। brand. We became वाह। number one in Q3, Xiaomi and इंडिया का again in नंबर वन Q4, स्मार्टफोन we were the ब्रांड बन number चुका है one क्वार्टर 3 brand और in क्वार्टर India. 4 2017 का। बहुत बढ़िया। 2018 If you में look at the Redmi Note latest 5 का IDC जलवा report, है। which came out yesterday, we are now the Xiaomi का लाइक undisputed करो। number one brand with about 27% कम आ market रही है share. भाई, उसकी है ही इतनी है यार, क्या कर सकते हैं हम। मैंने फुल पे रखी है। Thank you. And if you look at just the online segment, we're the dominating number one brand. We have 57% market share, which is approximately 6x. Thank you. This is about 6x bigger than the second biggest brand in the online segment. Now, we were always selling products online, and about a year Calm ago, down, we start. decided to also build our offline business. And happy to share that in such a short period of 9 months, लाइक मारो जी Xiaomi has जिसने लाइक become नहीं the मारा अभी। second biggest brand in offline एक्सपोनेंशियल with ग्रोथ इन 11% share. ऑफलाइन, सेकंड इन ऑफलाइन 9 मंथ्स। वाओ, सैमसंग के बाद Xiaomi चल रहा है भाई, Vivo Now, Oppo this has पीछे रह been गए। possible because of the amazing products that we have. अरे 5वें If you नंबर look पे at the लावा, top 10 क्या selling बात है। smartphones in Q4 2017, 6 out of 10 ओहो were Xiaomi phones. 6 फोन Xiaomi के बिक रहे हैं सबसे ज्यादा। And a big shout out to all जल्दी our लाइक Mi करो fans, जी, जल्दी लाइक because करो। this wouldn't have been possible without you guys. Thank you so much, guys. Thank you for वीडियो supporting our भाई business लंबा for जाएगा last 3 years. सुदर्शन। Now, I also want to take a moment and talk about the Xiaomi philosophy. We are not about sales. We really want to become friends with our Mi fans. So how do we become friends? We, of course, launch really innovative products with very high specs. But more than just specs, we also focus on quality. थैंक यू अमित। And then what we do, what चलो I मैं call जल्दी is से इसको honest शेयर कर pricing. देता हूँ 1 मिनट लगा We के, ठीक है? always try and तब तक आप price our देखो products इसको। at cost. And we try and make them available to you guys at lowest possible price. Take an example of Redmi Note 4. Amazing specs, great quality, unbeatable price. And that's why Redmi Note 4 was the number one selling phone in 2017. We shipped out more than 9.6 million phones in just one single year. Wow, what a huge number ना यार। Almost And not 1 just million, these amazing almost. sales, this was also one of the highest rated phones. For example, if you go to Flipkart, more than 1 million people wrote positive comments about Redmi Note 4 on the platform. A lot of people Very said good, great very things. good. For example, Android Authority said this was the well-rounded package, or I would say this was India's all-rounder phone. Wow, great. Some people also said this is the phone to beat Redmi Note in 4 किस किस के पास है भाई? 2017. And I personally believe there was no phone which even came close to beating Redmi Note 4. So today here we are. We're about to launch a phone which we think will beat Redmi Note 4. And this phone is जी टेक जी Redmi Note 5. Redmi Note Give me 5. 5. आया ब्लास्टर is not trademark, We think बिल्कुल। this is an all-rounded upgrade to Redmi Note 4. And to talk more about this, I'll call on stage Sir बढ़िया Germany. बढ़िया अवीन। Give me 5. Thank you, Manu. Hello, everyone. How are you guys? Enjoy the My live name is Jay guys। Mani, and I'm the lead product manager for Xiaomi here in India. And as Manu mentioned, today we're here to talk about Redmi Note 5. Now, it's easy to think that a phone is just about the specs, but we believe that there's more to it than that. And our goal has always been to help you understand more about our products beyond just what you see in a table. And I personally believe Soumya. that's the reason why we've been so successful here in India. So today, we have some really cool stuff to show you, and I hope you enjoy it.
So Redmi Note 5, it's an all-around upgrade. We Design, kept the camera same great quality. things that made Redmi Note 4 the best-selling phone Let's hope in for the India, best. but we upgraded everything else. And the three main areas I want to talk about are design, camera, and quality. So first up, let's start with design. We have a really मुझे लगा था awesome पहले video टीवी to होगा show लॉन्च, you. इन्होंने पहले So Redmi let's run Note that 5 right लिया now. है. Woo! A Note 5 is coming. Wow! A single camera in Note 5. Note 5 में जी सिंगल कैमरा है, देख लीजिए. और सामने से बिल्कुल 5 प्लस जैसा लगता है, Redmi 5 प्लस. सेल्फी फ्लैश. मैं साथ साथ में बता रहा हूँ, सब सुनते रहिए. ओपिनियन वीडियो आने वाली है, टेंशन मत लेना. हेडफोन जैक भी है भाई साहब, शुगर है. कैमरा सिंगल है यार, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, चलो अच्छी बात है जी. इंडिया ऑलराउंडर. डुअल कैमरा नहीं है यार, मैंने पहले बोला प्रो मॉडल में The आएगा video यार. is so awesome. If we had time, I would run that again, but we got a lot of stuff to talk about today, so let's keep going. So the biggest upgrade that we 5.99 made when inches it full comes to HD Redmi plus Note 5's display. design is the display. Redmi Note 5 has a 5.99 inch Same Full as HD Redmi Plus 5 Plus. display. If you And this is remember, the सबको first याद हो तो Redmi 5 phone Plus में that भी we've यही है. released with these larger aspect ratios since Mi Mix. So if you look at Redmi Note 4, it's pretty much what all phones have looked like for the last few years, the 5.5 inch 16 by 9 display. But when we compare it to Redmi Note 5, we've reduced the borders on the top and bottom significantly, and we've used all that space to give you more display. It's actually 12.5% more display area in a similar form factor. So we've removed the stuff that you don't need and given you a bigger screen. And when you start using phones like this, 12.5% बड़ी डिस्प्ले हो तो any पता है other यार, Redmi phone 5 Plus just में पहले आ चुकी feels है. old. कुछ नया बताइए. Even phones that were released this month, they सही just बोला कि नहीं feel मैंने? old. अरे ये क्या व्यूअर्स कम हो गए? Xiaomi को So प्यार what नहीं can दे you रहे do हो with आप that सब? extra space? Well, if you haven't used it before, it's really great, particularly for web pages where you have more content. You don't have to scroll as much. It's really good for gaming. You either get more space to give you an advantage, or you have bigger touch targets, so you can be more accurate. And Redmi Note 5 also has a similar premium metal body with a Okay, tapered अमित back आपने edge. सेल कर Actually, दिया, कोई it's बात difficult to नहीं. see 5 here on ले the लो. slide, 5 Pro but if लेना you यार. compare the taper to हेडफोन Redmi जैक Note सब 4, में है Redmi के the फोन में, slide here, बिल्कुल. प्रीमियम मेटल बॉडी आ गई है जी, टेपर्ड the बैक angle है. here is adjusted by a बट couple of सेम लग degrees, रहा so है it जी. feels smoother. 5 It Plus fits in closer with the थोड़ा edge. बड़ा हो When you गया. compare it in the demo zone, you'll see that it feels a बड़ा lot नहीं है यार better अभी, in ठीक the है. hand. स्क्रीन बड़ी है बस. Another big change we made ब्यूटीफुल is that it's a बीस्ट lot जी. thinner. Redmi Note 5 is 8.05 millimeters thick. It's almost a half a millimeter व्यूअर्स कहाँ चले thinner गए जी? 20 than रह the गए, Redmi क्या Note हो 4, गया? and it's the thinnest Redmi Note ये we've 3 ever डिसलाइक made. मारने वाले कौन है And जी? it still, most importantly, has the same great फोन 4000 बहुत mAh ज्यादा वाला battery. पतला भी So we've नहीं है, made the phone thinner, 8.05, but we've kept the battery the बट same. थिनेस्ट Redmi Note. चलो अच्छी बात है जी. And I think the best part of the Redmi Note 5 design IPK. is that it feels modern, but it also is familiar. It looks like a Redmi Note. Here's a look from both the front and the back. Beautiful white and gold. Yes. रोज We've also added a new and elegant rose gold, perfect for Valentine's Day today. जो कि आईफोन की कॉपी बिल्कुल नहीं कर सकते And a अभी. color that some of you might be familiar with. Blue. A lot of people ask me about this. Lake blue. This was really popular when we released it with Redmi Note 4 towards the end of Blue last year. color. Did you like blue color, guys? So Redmi Note 5 comes in 4 colors: black. Guys, आपको कौन सा Gold, कलर ज्यादा अच्छा लगा rose सबसे? gold, My and light favorite blue. is black. The design has smaller borders with more display. It's a thinner body with the same battery life, and it हाँ, still PK हो feels सकता है. great in the hand. So now let's talk about the camera. We've gotten a lot of feedback from you guys on the cameras for Redmi Note 3 and Redmi Note 4, and we worked hard to make changes this year. A lot of people said that the camera of भाई Redmi Note अभी 4 ये was तो good अभी as देखते long as हैं, the lighting was बताएंगे ये good, कब but अवेलेबल हो it started जाएगा. to struggle in low light.
So we wanted to change that this year, and we made a bunch of improvements. So let me start with the rear camera. 1.25 So we've upgraded the rear camera sensor to have a large 1.25 micron pixel. मेरे हिसाब से 12 मेगापिक्सल ही होगा. With low light photography, and it's similar to what we had in the main sensor of the Mi A1. It's one of the reasons why people love Okay, Mi A1 का जो स्टैंडर्ड कैमरा है सेम यहाँ लगाया गया है, तो I think अच्छा होगा. In the segment to have these kind of pixels, so your photos will look brighter and crisper, especially in low light. Hello. And compared to Redmi Note 4, it has about 25% more pixel area. भाई प्रो अच्छा होगा यार. And when compared to the 1 micron pixels on Redmi Note 3, it's about 56% more light. So the low light performance on Redmi Note 5 is significantly better than our previous generation Redmi Notes. बंदा स्मार्ट है यार. Let's take a look at a couple of snaps. Okay, the camera samples. This photo here, there's two things to notice. If you look at the sharpness on all edges here, really, really crisp, but also the dynamic range. Camera samples on this building have different light. You have some parts that are in shadow, you have kind of a yellow light here, a red light here, and it all comes out well. It shows a lot of the power of our HDR algorithm. This photo is, again, taken in low light. All of the lights are off here. It's taken towards the evening, but you can still see a lot of the details in the shop, even though it's dark in there. Gold. It shows a lot about good white balance. बिल्कुल यार, Redmi Note 5 इतना अच्छा नहीं है. Pro लग रहा है कि Pro आएगा यार. बहुत जगह सुन लिया मैंने. Auto white balance. You can see the white color. Okay, तो मुझे भी लग रहा है यार लाइव में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें. आप सबको लग रहा है? And then even the browns look good here. लाइव में प्रॉब्लम है? So photos, and especially low light photos, are a lot better on Redmi Note 5. And it's not just the rear camera. We've also added an LED selfie light on the front. So you have better low light photos, both on the front camera and on the back camera. One second. I think live में कुछ प्रॉब्लम आ गई है. Usually when people talk about focusing on India, they're talking about things like localization, translating the... I mean, these are things that we did in MIUI 3 years ago. But the customizations that we're talking about here, the things that we did specifically for India, for Redmi Note 5, they all have to do with improving the quality. This is something that Manu talked about, and it's something that we've been focused on for the last year. Our components are sourced from first-class suppliers, and for Redmi Note 5, we raised our standards even more. Redmi Note 4 had a single pyrolytic graphite sheet, and this decreases the surface temperature on your phone by about 1 degree. In Redmi Note 5, we have dual pyrolytic graphite sheets. Mouthful. वीडियो रुक रहा है ना भाई समझ नहीं आ रहा है यार स्ट्रीमिंग को क्या हो गया एकदम से. हैंग हो रही है मेरे भी. Note 5 Pro कब आएगा भाई? आज ही आ जाएगा. ओके, गुड लाइव है. दोनों ब्रो यहाँ तो लाइव खराब हो रही है. And this is something that we're continuing here with Redmi Note 5. अभी हम गाली निकाल रहे हैं. भाई ये Redmi कंपनी के साथ करने के इंडिया में कमजोरी पकड़ लिया. अभी तक ध्यान में दिए एक फोन लॉन्च होता है फिर एक दो लोग. हाँ सही बात है, प्राइस 2 हो जाते हैं. लाइव लैगी है मुझे लग रहा है. मुझे भी पता चल रहा है भाई. ये थोड़ा अभी से ठीक हो गया है थोड़ा सा. ये YouTube की लाइव में प्रॉब्लम आ रहा है भाई. नो प्रॉब्लम लाइव. थैंक यू संदीप. हाय राहुल. व्यूअर्स कम हो गए. व्यूअर्स 15 रह गए सिर्फ. Something that I think has been asked for quite a few times. लाइव फिर अटक रही है. And in terms of testing and QA standards, we're actually using many of the same tests that we use on our flagship Mi series. We have a cool video to show you some of these tests. जी लाइव रुक रही है. पता नहीं ये पीछे YouTube में कुछ प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली. लाइव थोड़ी रुक के चल रही है. Our Redmi series is थोड़ा सबर built रखो, with them in बीच mind. में ठीक हो जाएगा. Quality products and honest Let me pricing. check in the software. Every Redmi device is subjected to more than 4,000 software and hardware tests during the research and development stage. Any failed test leads to a complete redesign of the product. We run with the belief that the more tests we do, there would be fewer problems in the future. समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है. That the stricter our tests are, live there would streaming be वैसे fewer तो ठीक issues चल रही है faced in यार. the future. At Xiaomi,
We believe that संदीप quality को ठीक आ रही control है is a स्ट्रीमिंग collaborative अगेन एंड effort from the अगेन। बिल्कुल entire यार, यूट्यूब में team. कुछ प्रॉब्लम आ Quality रही है first स्ट्रीमिंग has में, always been the साउंड core कम आ of रही है, Xiaomi साउंड and है will ही कम, always continue this way for a long time. साउंड स्ट्रीम में ही Innovation कम है, decides how high we soar, तो while उसका तो कुछ quality नहीं कह defines पाएंगे। how far we go. यूट्यूब की स्ट्रीमिंग में एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आ रही है, बट बीच में बहुत अच्छा चलता है, बीच में खराब हो जाता है। राहुल कह रहे हैं नाइस, थैंक यू, हाय जी जी। At home, we did that so that you don't have to. कांट If you want, I एक्सप्लेन can ऐसा send you the क्यों हो video, रहा है, but don't बट do that to your बीच phone, में लाइव please. बहुत अच्छी चलती है, बीच में खराब So हो here are रही some of है। the tests So that we are talking about. Again, these I are many think of the मेरी same लाइव को durability Xiaomi का Note tests 5 that पसंद we नहीं आया, run on our Mi क्या phone. कहते हो? I doubt that many of you would use your fingerprint sensor over 600,000 times. So that's Redmi Note 5. सॉरी We've गाइस, जो upgraded ये three अटक key रहा है बार areas: बार, उसके लिए बहुत सॉरी, बट camera, and quality. एक्चुअली आई एम डूइंग And people really बहुत love कुछ Redmi करने की Note कोशिश 4 कर for रहा हूँ its कि great ठीक हो जाए, performance and बट battery life. नहीं हुआ And so रहा। Redmi Note 5 continues that legacy. ये It YouTube has की लाइव में Snapdragon प्रॉब्लम आ रही है, 625. सो आई एम टेलिंग यू Oh, बार बार। cheers. Thank you. I agree. We agree. Snapdragon 625। And last year we spent a lot of time talking about why. We talked about What the 14 hell? nanometer What FinFET, the hell? and I don't think anybody Snapdragon before this had talked 625। about that. And I think many of you were skeptical at the time. Now we got cheers. Thank you. And it turns out that we were right. It turns out that millions of people love the performance on Snapdragon Redmi 625 है Note जी 4. इसमें And Note so we 5 use the same में। processor मैं अपनी because it ओपिनियन still वीडियो gives लाने great वाला हूँ power इस लाइव के efficiency बाद, and तो great thermal लाइव में थोड़ा performance. सा आप And of course, we've also करो, kept थोड़ा the सा 4000 यार mAh battery, एडजस्ट, which is इसके something बाद that मैं we वीडियो लाने pioneered वाला here हूँ। first सो with Redmi Note 3. 4000 mAh की Once you बैटरी है start जी। using one of these phones, it just spoils you. It's really difficult to switch to anything else. So that's Redmi Note 5. It's India's all-rounder. हसमुख भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, थैंक यू यार समझने के लिए। चलो मैं ओपिनियन वीडियो लाने वाला हूँ। Redmi 625 आ गया है स्नैपड्रैगन का, जो कि हमें लगा था। I think might still be a surprise. So when we do the comparison, you can see that we took the stuff that made Redmi Note 4 such an easy phone to recommend and really made it the best-selling phone in India. Snapdragon 625, 4000 mAh battery, and we upgraded everything else. You have a full-screen display, 5.99 inches, बिल्कुल यार, हमें पुराना माल दे दिया है। better low-light performance with the bigger pixel rear sensor. अब मैं Redmi Note 5 Pro की वेट कर रहा हूँ, अगर वो आ जाए तो अच्छी बात है। So last year we sold the 332 version for 10,999 with Redmi Note 4. पिछली बार 11,000 था प्राइस, इस बार है 10,000। 10,000, 1,000 कम है जी, 10,000 का रेट है। This year we're starting with a 3 GB version at an amazing price of 9,999. You cannot find a phone like this at that price. So the 4 GB version, which was the most popular version last year, and it is still the best-selling phone at this price. So with Redmi Note 5, we wanted to do even better. We've taken the 4 GB version and made it 11,999. चलो 12,000 में 4 GB 5 Pro की वेट है जी। भाई जो पिक लीक होता है वो कंपनी कर देता है, बिल्कुल भाई। 11,000 बेकार है, घटिया। चलो Snapdragon 625 डाल तो तोड़ दिया, आप देखते हैं प्रो मॉडल आता है कि नहीं। We've also made an ultra slim case. It looks great, and most importantly, it actually protects your phone really well. So pretty much everybody we talk to has a case, and when we look at the reviews of some of the popular ones, they're not that great, and most of these cases are around $200 to $300. So with Redmi Note 5, प्राइस ने डिसअपॉइंट तो नहीं किया यार, प्राइस तो चलो ठीक है, बट 625 ने डिसअपॉइंट किया। Note 5 Pro got 636, शायद देखते हैं जी, आई होप, मैं भी होप करता हूँ पासना Note 5 Pro में आएगा क्या, देखते हैं भाई, अभी आगे अनाउंसमेंट। अब तो बस 5 Pro की से उम्मीद है। मैं क्या बोला था अमन भाई, मीडिया को कमजोरी पकड़ लिया, बिल्कुल यार, प्रो की वेट करते हैं बिल्कुल। प्रो आज, अब ऐसा ना हो कि प्रो की अनाउंसमेंट ना हो किसी वजह से, तो वो और दिल दुख जाएगा। प्रो आना चाहिए।
लाइव में फिर से प्रॉब्लम आ So रही that's है। it, Redmi Note 5. It's India's all-rounder. Big upgrades to design, especially with the full-screen display. Low light camera improvements, both to the I don't front like this and सिर्फ इसमें back. 18:9 ही है जो, And और एक थोड़ा importantly, कैमरा a lot इम्प्रूव of हुआ है। quality improvements, उसके अलावा तो specifically यार here सेम ही for मोबाइल India. है। And we still have डिट्टो the मोबाइल best in सिर्फ class battery life and स्क्रीन performance. और थोड़ा कैमरा इम्प्रूव। It also comes with the Ultra SIM case for free. नेक्स्ट टीवी लॉन्चिंग होगा, देखते हैं यार। So Redmi Note 5, it's an all-around upgrade to what is still today one of India's best-selling phones. And this photo is from a trip. चलो लाइव जैसी भी आ रही है, ऐसा है कि मैं आपको साथ साथ में बताता जा रहा हूँ। We really believe in आपको Redmi पसंद Note आ रहा होगा। 5, but many of you have प्रो asked नहीं us आया तो Xiaomi for को more. भाग जाना चाहिए, बिल्कुल यार। And so, for एंड that, we रंजीत, have चलो छोड़ो, Redmi Note 5 थोड़ा ज्यादा प्राइस Pro. कर दिया भाई। और 11 के ऑनर 9 लाइट, हाँ बिल्कुल 11,000 में 9 लाइट ज्यादा बढ़िया है। 5 प्लस चाइना में लॉन्च किया है, वही है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रो नहीं आया तो मी 7 This के is लिए the रखूंगा यार, 2 global महीने और debut रुकना of पड़ेगा, Redmi बिल्कुल Note यार 5 Pro. बिल्कुल। This is the first time you'll see प्रो this नहीं आया तो anywhere रेडमी in को the बहुत world. गाली पड़ेगी, बहुत ज्यादा। And again, I आ want गया to आ गया आ गया emphasize जी, that आ we गया don't रेडमी नोट just 5 say प्रो we आ गया focus जी, आ on गया India 5 because प्रो it आ गया। sounds good. We are the only company that is consistently launching new products here in India first. आ गया जी, प्रो लिखा आ गया, ग्लोबल And so Redmi लो Note 5 जी। Pro, it is also the अच्छा first जी, पीके device जी in the world आ गया जी। to come यार with ये नोट Qualcomm 5 प्रो पे Snapdragon आके लाइव खराब होने 636 लग गई mobile है जी। platform. Yeah, the first यूट्यूब की device लाइव इतनी in the खराब world. क्यों है? And स्नैपड्रैगन again, this is the 636 third फर्स्ट year in a टाइम row that we're doing एवर। that. यस First, यस we यस, did the स्नैपड्रैगन Snapdragon 636 650 with Redmi Note 3. Last year, Snapdragon 625 with Redmi Note 4. प्रो है, And ये this आया year, मेरा बेटा प्रो। Snapdragon 636 with the Redmi Note 5 Pro. यार लाइव खराब चल रही So है, it's बहुत not गलत बात है। लाइव ठीक हो जाए एटलीस्ट just यार, a मजा आ जाए। statement. We actually launch things, सुपर प्रो new मेरा चैनल पे technologies देख लो। here in India ओके ओके, first. साला फीचर्स भी And we're मिल really, गए really सब, proud तो of that. मजा आ जाए। हाँ यार, जो So, सोचा है लग तो रहा है यार, स्नैपड्रैगन 636 people आ गया love एक the तो। performance of अब Redmi लगता Note है 3. डुअल कैमरास भी And आ that was जाएंगे। because it had those flagship अब grade लगता है A72 कि cores जो in मैंने it. आपको प्रो के बारे में बताया था So सब Snapdragon सही है। 636 लेटेस्ट comes कारो with the latest 260 Cryo जो microarchitecture. स्नैपड्रैगन And for those of you 800 who में don't मिलता know था, Cryo, they माइक्रो are आर्किटेक्चर, Qualcomm's दैट्स semi-custom CPU रियली based ग्रेट। on ARM Cortex technologies. Now these Cryo cores were previously exclusive to 800 series phones. हम इसे Things क्रायो like बोलते हैं, the मैं कायरो Snapdragon क्यों बोलूं? 820 and the सॉरी, Snapdragon ठीक 835. है। इसमें देखना And प्रो Snapdragon में ज्यादा कुछ 636 देगा, comes प्राइस with लो। Cryo देखते हैं यार। 260. यस इट इज ऑन These are 636, यस based ठीक on है। the flagship grade ARM A73 core. 20 लाइक कर And दो here's यार, some of the किसी ने नहीं benefits that किया you तो। can see here. It has up to ओके, तो 50% 50% better हाइयर performance परफॉर्मेंस and is होगी और almost 40% 40% ज्यादा more बैटरी power एफिशिएंसी efficient. होगी। And Cryo 260 isn't just बहुत about बढ़िया, peak अच्छा लग रहा है जी, performance. अच्छा It's लग रहा है also a भाई। मेरी huge अब बिल्कुल सही improvement चल to रही है sustained वीडियो, नजर performance. मत लगाओ So वरना you फिर have से लैग flagship करने लगी। performance लो करने लग गई भाई। for a long period of time because it's optimized संदीप आपका for ही खराब चल रहा है efficiency. सर पता नहीं यार, The मेरा तो Snapdragon खराब आएगा है। 636 comes with चलो 4 1.8 performance गीगाहर्ट्ज तक Cryo जा सकते cores, हैं ये and कोर्स। this is the only phone anywhere near this price which has flagship ARM cores in it. बिल्कुल There are बिल्कुल, इस also प्राइस में आपको 4 ऐसा Cryo फोन नहीं cores for the मिलेगा power प्रो cores, which are जैसा। तो based प्रो on आप आई A52. थिंक बेस्ट रहेगा। आपने बता So you might have seen वो this सब before, निकला, फिर तो but 2018 what का does this भी all नोट 5 प्रो ही mean बेस्ट in सेलिंग बन जाएगा। practice? बिल्कुल हिरेन, What do we बिल्कुल वही actually चीज get? निकल रही है जो कि मैंने Well, of बताई course, थी। we ran इन onto अंकल को 2 on सुनने it, की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। and तो I think the अंकल results are pretty अटकते भी good. हैं तो कोई बात नहीं, अटकने दो, मैं तो आपको बता रहा हूँ। Antutu स्कोर देखिए 109692, फास्टेस्ट रेडमी नोट एवर। बिल्कुल बिल्कुल रेडमी नोट फास्टेस्ट है। So we listened. With Redmi Note 5 Pro, we are again bringing ये जैसे ही flagship-grade लॉन्च कर देते performance हैं to the मैं Redmi अपनी Note वीडियो को series, अपलोड कर and देता that's हूँ, all जो thanks कि to मैंने आपके Snapdragon लिए बना दी है 636. अपनी This ओपिनियन वीडियो। completely ठीक है, destroys the मैं आपको performance पहले of बता any दूं, phone उसमें in थोड़ा this सा segment. प्राइस का If you हेरफेर है जो want कि मैं performance डिस्क्रिप्शन for में लिख power, दूंगा, तो Redmi Note 5 डिस्क्रिप्शन Pro से is आप the प्राइस only जरूर phone चेक to कर get. लेना। And if we compare it to the बिल्कुल Snapdragon जबरदस्त फोन, बिल्कुल 625 and जबरदस्त Redmi फोन। Note 4, it has over 59% better performance on Antutu. Now, 8X A53s are great, but for flagship grade performance, you need the Redmi Note 5 Pro.
So last year, we talked about 14nm FinFET, and this is the reason why we avoided some other CPUs that you guys had asked us for. We spent a lot of time talking about the benefits. Okay. And ये so भी we 14 worked with नैनोमीटर के ऊपर Qualcomm, आर्किटेक्चर and we बेस्ड है. waited for Snapdragon 636 because it has the best of both worlds. The और raw तेरी तुषार जी कह रहे performance हैं, of Cryo, हिरेन कह रहे along हैं with the वैसे भी वो efficiency, क्या बोल thermal रहा है performance, नहीं and समझ में battery आ life रहा. from आप बोलो 14nm वही ठीक है. FinFET. थैंक यू जी. ठीक है जी, मैं बोलता The हूँ. Redmi Note 5 Pro तो with स्नैपड्रैगन Snapdragon 636 has 636, the it has flagship flagship DNA. DNA, and it still has 14nm FinFET for thermal अरे performance अरे अरे and battery life. इतनी नोटिफिकेशन. We Larry worked closely Paulson, with our friends at Qualcomm Qualcomm to make this product. president Larry of Paulson, the Qualcomm president of India. Qualcomm India, is here today. Thank you so much चलो for और your hard ये work and जल्दी से support. बता दें कि क्या आने And Larry वाला was है. kind enough डुअल to share कैमरा this वैमरा quote जो with भी है us सब कुछ उसके बाद on मैं our आपको अपनी collaboration. वीडियो डाल के देता हूँ जो कि मैंने We're बना proud to रखी है collaborate with अपनी Xiaomi for the ओपिनियंस की. global debut of the Qualcomm Snapdragon वो मजा आ जाएगा 636 आपको देख mobile के. platform. बस थोड़ा सा Sporting our प्राइसिंग latest का मैं आपको बता रहा Qualcomm हूँ कि Cryo प्राइसिंग जो है semi-custom वो थोड़ी CPU, मैंने डिस्क्रिप्शन में सही Snapdragon लिख दी है तो वो जरूर देख 636 लेना makes Redmi Note 5 उस Pro वीडियो की a डिस्क्रिप्शन में. true ठीक है ना. performance beast. Thank you very much, Larry. मेरी तरफ से तालियां. We totally agree, by the way. प्रो मॉडल अच्छा So है it's जी. the प्रो best मॉडल अच्छा of है. both worlds. And we think Snapdragon it's exactly what 626 you've been flagship asking us DNA, for. great thermal Best-in-class performance. in the Redmi Note series. But we're not done with performance yet. Redmi Note 5 Pro also has up to 6 gigabytes of RAM. 6 GB RAM. This is the first time ever करने दो in अभी a Redmi बन्यू. 6 gigabytes of क्यों RAM. But it's क्रोम not यूज just कर about रहे हो the बिल्कुल पी के. size. We've also used the fastest type of RAM available in the market, LPDDR4X RAM. This is the same फास्टेस्ट RAM kind of RAM that you'll find LPDDR4X. in any flagship phone हर एक today. फ्लैगशिप फोन में होती है ये. It's up to 35% 35% more more power power efficient efficient है ये compared to RAM. LPDDR3 RAM, which is what you find in most phones in this price range. And it's 20% more power efficient than LPDDR4. So Redmi Note 5 Pro has amazing performance. Snapdragon 636 and up to 6 gigabytes of incredibly fast LPDDR4X RAM. It is the most powerful Redmi Note तो ये कॉम्बिनेशन तो अच्छा है. and it is by far the most powerful phone that you can get anywhere near this 6366. price. All right. Down Let's the talk about design. Just like Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro is beautiful. So we have another great product video to show you. So let's take a look at that. यस यस हमें 128 GB इंटरनल मिल जाए तो बढ़िया है. नहीं 64 मिलेगा यार. Dual cameras like iPhone 10, vertical position, the blur mode. So excited. Same here. Same here. लुक्स तो बढ़िया है जी पर सेम है. बस पीछे से डुअल कैमरास और थोड़ा थोड़ा Mi A1 और Redmi Note 4 का मिक्सचर. कैमरास को बता दें तो हम भी निकले यहाँ से और लाइव को बंद करके आपको दे दें एक बिल्कुल ओपिनियन वाली वीडियो तो मजा आ जाएगा. ये तो सेम लीक जैसा निकला भाई. बिल्कुल बिल्कुल जो मैंने आपको बता दिया था बिल्कुल सेम वैसा ही है. Back cover to what we have in Redmi Note 5, and it curves perfectly in the edges. And if you'll notice in the demo zone, the corners are also a little bit different than Redmi Note 5 Pro. It fits really comfortably in your hands. अरे लाइव मेरा तो फिर लैग कर रहा है. Here's the gold version. Again, elegant gold on the back with the white front. But probably more appropriate for today, the Valentine's Day pairing of the Lake Blue आपके लिए मैंने क्लैप कर दिया बट लाइव का नहीं समझ आ रहा लाइव कैसे चल रहा है इसमें. It looks really elegant. Again, check it out in person in a little bit. So here are all four. वीडियो रुक गया सिर्फ आवाज आ रही है. आई डोंट नो यार ये क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा.
इतना अच्छा चलते चलते एकदम से रुक जाता है, इतना अच्छा चल रहा है इस वक्त, इतना अच्छा चल रहा है, आवाज ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो इनको क्या प्रॉब्लम है भैया? But the real reason why you should buy this phone, the real true power इसमें of this मूनलाइट phone सेल्फी है ना मार्स वाली? भाई इसमें ना मूनलाइट वाली है ना मार्स वाली है, इसमें सिंपल आपको मिल रही है सेल्फी लाइट फ्लैश सॉफ्टवेयर। इंडियाज कैमरास बीस्ट। ओके, तो बजट सेगमेंट में ये बेस्ट कैमरा हो सकता है Xiaomi की तरफ से। लेट्स सी of any smartphone that we've shipped here in India. So let's start रियर कैमरा के बारे में बात करें तो रियर कैमरा आपको जो मिलने वाला है Redmi Note 5 Pro has a dual camera. I got डुअल कैमरा एवरोन Redmi Note सीरीज, Redmi Note 5 Pro में smartphone. यहाँ आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर जो कि कैप्चर करेगा डेप्थ इंफॉर्मेशन, और 12 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर जो कि देगा स्टिल इमेजेस 1.25 माइक्रोपिक्सेल्स का। यहाँ पर आपको 1080p का रेजोल्यूशन मिलेगा फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। पोर्ट्रेट मोड है जहाँ पर आप आराम से डेप्थ सेंसिंग कर पाएंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। 4000 mAh की बैटरी, इसमें सब कुछ सेम आपको देखने को मिल गया है भाई साहब। AI बेस्ड कंप्यूटिंग इंजन है बेस्ड ऑन Xiaomi's पावरफुल डीप लर्निंग एल्गोरिथम, तो AI बेस्ड कंप्यूटिंग इंजन मिल जाएगा आपको। This is based on our powerful deep learning algorithm. So semantic segmentation मेरा रुक रहा है संदीप, मुझे भी लग रहा है। मोर एक्यूरेट एज डिटेक्शन, तो देखते हैं कितना अच्छा एज डिटेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। भाई मैं जाऊँ आपकी वीडियो का इंतजार करूंगा, ठीक है अमित भाई, कोई बात नहीं। when you're in a portrait mode, there's two main objects. बस मैं डाल दूंगा अभी। Foreground, which is the person, and there's everything else in the background. चलो यार, लाइव में सब कुछ पता चल गया है, तो आई थिंक लाइव को बंद करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे अपनी वीडियो डालते हैं जल्दी से। मैं आपको वीडियो आ रही है थोड़ी देर में आपके लिए, बस डिस्क्रिप्शन में एक बार उसके प्राइजेस चेक कर लेना, ठीक है? या इसका प्राइस यहाँ पर देखना चाहोगे? It's pretty awesome, right? प्राइस में ही कुछ डिफरेंट लग रहा है। We started with this one because you can see the depth effect is really good. This guy really pops out in the photo. But importantly, the sensor quality shows up here in the details on his shirt. It's white on white, but you can still make out the details and the texture of his shirt pretty well. So here's another one. Nice camera. The edge detection of our algorithm is really, really good. अच्छा कैमरा है अभिमन्यु, अच्छा कैमरा है। Here, particularly around the hair and the shoulders, when it starts to get dark, it's actually still sharp. प्राइस के लिए रुके हो, ठीक है? प्राइस देख लो, उसके बाद बंद करता हूँ। The background is right. मैं भी प्राइस के लिए देख रहा हूँ वैसे तो। Details are still sharp and in focus. Now this photo is a favorite of a guy on our team. It really matches his personality, I think. It captures this guy's fun, playful, but yet serious spirit. All right, so all of the photos I just showed you were taken without any special equipment, of course. But the thing that makes the Redmi Note 5 Pro camera awesome, and the thing I want to emphasize, is that it makes it easy for anybody to take these types of photos. कहीं और देखना पड़ेगा, मैं सिर्फ वीडियो डालने वाला हूँ इस वक्त। Not professional photographers. मैं को Redmi Note 5 को कवर करना था, VTV को नहीं, तो and they're really cool. Thanks Abhimanyu. So this photo shows the portrait mode. This camera sample is really good. ये जो अभी आपको दिखाएंगे डॉल का, this is on an object. This isn't on a person. The portrait mode बहुत अच्छा लग रहा है कैमरा on sample many तो। different types of objects. Wow. Here again is another कलर shot to प्रोडक्शन show मेरे को our बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे algorithm. कलर प्रोडक्शन, तो All of I these think rocks in focus, बढ़िया and रहेगा there's beautiful कैमरा भी। colors everywhere in the image. This next photo is, I think, my favorite. Yes. I mean, look at that photo. अच्छा है जी, This looks like it was फोन taken अच्छा in a है, DSLR. जिसको अच्छा And this लगा was not लाइक taken मारो, by a professional जिसको अच्छा लगा photographer. And the interesting thing वीडियो here के is लिए there's actually वेट 4 करना, people इट्स ऑल in this डिपेंड्स photo. अपॉन There's 3 people प्राइस। over there on the left, इस प्राइस से and अट्रैक्टिव there's a person ये सबको right फिर behind फिर the सबको baby फाड़ देगा, in the बिल्कुल foreground. And yet, जी फाड़ she देगा। is still in focus. Everything is blurred correctly. Even the edges here are sharp. It's pretty amazing. This is the power of AI-based semantic segmentation that we have in this camera. एक क्लैपिंग हो जाए,
So I think this next thing you guys भाई will मार like. देगा, ये अच्छा प्राइस है। For videos, Redmi Note 5 Pro comes भाई with फास्ट EIS. चार्ज सब करता है भाई, अभी तक तो नहीं बताया इन्होंने फास्ट चार्जिंग, मुझे नहीं लगता। EIS है So जी that one we heard the इसमें, feedback. Put it in here. EIS का सपोर्ट है। So now let's talk about the front camera. And actually, I think the front camera is even better than the rear camera. फ्रंट कैमरा, ओके, तो फ्रंट कैमरा में भी बोके इफेक्ट्स है जी। मेरे को वीडियो फिर से शूट करनी पड़ेगी जो मैंने पहले की थी, क्योंकि कुछ चीजें इसमें नई आ गई हैं तो मुझे वो जोड़नी पड़ेगी भैया। Particularly impressive because it's taken on a front camera. The bokeh effect 9 लाइट को is really पीछे छोड़ good. रहा है जी, You have 9 good लाइट को colors, पीछे छोड़ रहा है। deep 9 लाइट blacks लेने की on कोई her जरूरत नहीं है, hair. वेट करो The प्रो dress, के लिए। the shirt comes out, the reds are nice. But again, importantly, there are two people in this photo. And the portrait mode is applied correctly. This is a major stumbling block for many, many different cameras which have portrait modes. So how do we do this? Well, this is our first phone ever which ships with portrait selfies. 20 MP का ही हो सकता है, हमें देखते हैं बाकी यार। Really great. Just like with the rear camera, इधर भी we AI use है, our AI-based artificial computing engine to make this intelligence। happen. But unlike the rear camera, this is done with a single camera. Great। So the deep learning algorithms here are key. सामने आपको And सिंगल as I कैमरा मिल रहा mentioned, है। and as you all know, दुकान में तो software यार is जल्दी नहीं really मिलेगा भाई, key for a great फ्लिपकार्ट पे camera. मिलेगा अभी मेन्यू। All right, so comparing Redmi Note 5 Pro to the iPhone 10 might seem like a stretch to some of you, but I encourage all of you to try it. Our algorithm is really, really, really good, especially if we zoom in here. Not only the edge detections, but iPhone the 10 को टक्कर details, दे रहा है फ्रंट the hair, कैमरा। everything is just better. Right, so the Pixel 2 is considered one of the best cameras in the industry, and both of these images are good. But again, if we zoom in, while the Pixel 2 does a better job than the iPhone 10, Redmi Note 5 Pro still has better edge detection, and it still captures more details in the hair. हाँ जी EIS डाल दिया है जी, तो शहर जी EIS डाल दिया है। अच्छा लग रहा है यार इसका सेल्फी कैमरा बहुत ज्यादा। लो लाइट सेल्फीज। So the second problem we wanted to solve with the front camera is low light selfies. मुझे वीडियो शूट करनी है। So we have a 20 megapixel front camera. It has a large f2.2 aperture, but it's not just any 20 megapixel sensor. It's also high quality. EIS यार एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि आपकी वीडियो स्टेबलाइज होती है, ठीक है? स्टेबलाइज्ड वीडियो बनेगी। It's a 20 megapixel front camera. 20 megapixel front camera, Sony IMX376. That means we have Sony sensors on both the front जो and rear बताया था camera. मैंने लीक्स में वही है रे। And we combine 4 pixels into one in a process that's called pixel binning. You 2 can see it microns here. का The pixel result of this size। is that each pixel has less noise. So I can run this one more time. And so when we combine these 4 pixels, the effective pixel size is 2 microns. थैंक यू It's like a अभिमन्यु super भाई, pixel. अब तो And ये that means लेना that it's है really, 6 really मंथ वेटिंग strong काम in low आई light. मेरी। बिल्कुल यार हिरेन Redmi Note अच्छा 5 Pro फोन है। also comes with an LED selfie light. सेल्फी We लाइट actually भी spent a मिल lot रही of है, time ये भी एक अच्छी optimizing बात the color है। temperature. We used a 4500 Kelvin color शेखर पटेल temperature नाइस, because थैंक यू जी after भाई। consistent testing, we found that it produces the most natural, देखो clear white वाइब्रेशंस पे light, वाइब्रेशंस which आ रही actually है भाई looks साहब, good on ये your क्या बात है? face. So you can see how this all plays out in this photo. It's actually taken under very difficult conditions, but the selfie light and the 2 micron pixels from pixel binning make ये it जो आपको भी दिख रहा है वो तो seem like the नहीं, lighting is इसके आगे एक actually लड़की की good in अगेन this एक photo. फोटो आने वाली है, वो फोटो बहुत अच्छी खींची गई है। So the front camera has 20 great low light megapixel performance perfect and selfies, awesome, what I consider to be portrait best in class selfies, low light portrait selfies. selfies, It gives you 20 megapixel perfect selfies. white So we is have some more barbar snaps healing। here today. Let's take a look at some of those. मेरा लाइव तो अगेन खराब दिख रहा है थोड़ा। So we have seen a lot of photos, a lot of front camera, particularly in portrait mode, where they Okay, get so this tripped up on photograph glasses. is really good, And really this good। image is really good because it keeps everything in focus. and EIS it और doesn't OIS पे अलग lose से वीडियो recognition बनाना just भाई, कुछ because समझ नहीं of आया। the ठीक है glasses. जी, So everything everything is you sharp need and crisp वाओ here. भाई, it's really अभी सब कमियां Xiaomi ने दूर I कर दी। think this बिल्कुल one is interesting Note 5 because the नहीं अच्छा, Note 5 Pro algorithm बहुत can अच्छा। actually distinguish
ये कौन है? ये भाई साहब Xiaomi में बंदा है, might be a reasonable वो दे रहा है इस वक्त It realizes that it's a plant. The semantic segmentation can blur it out, and if you look at that line on his neck, it's actually still sharp. बस करो यार, कैमरा सैंपल दिखाते रहोगे, प्राइस भी बता दो। The colors are awesome, and look at the contrast, particularly of the bee's image there on her shirt. मजाक कर रहे हो, हैं? सीरियस नहीं लेना। Beautify 4.0. So today we're also announcing Beautify 4.0. It's optimized through deep learning, and it's tuned specifically for India with tens of thousands of photos that we've taken here. Beautify 4.0 works on both the front and rear cameras. So normal Beautify modes typically use a single filter that applies across your entire face. But with Beautify 4.0, we went into a lot more detail. If you actually study how people do makeup, Skin it's cleanser never with a single brush इतना or कुछ अब mask. आपको लगाना नहीं So पड़ेगा, we देखो spend यार time बताओ। trying to understand what makeup artists do. Starting from things like the skin ये makeup वगैरह आपको लगाना नहीं पड़ेगा, brush. There are actually 12 primary steps. भाई प्राइस मैं थोड़ी लॉन्च करूंगा यार, ये सामने वाला बंदा करेगा। And we had our engineers study each step. And that's because it's not easy to understand the effects and the differences of each of these steps if you're just looking at the final result. So Beautify 4.0 can intelligently identify different skin variations and adjust the algorithm based on what it detects. Irritating, yes भाई मैं भी हो रहा हूँ काफी। So this area highlighted here is what's called the T-zone. It's typically the most oily part of your face, and that's most prone to acne and clogged pores. So again, if you're using a single filter across your whole face, it might leave behind some blemishes here or over-smooth everything in the T-zone. So you can see that Beautify 4.0 does this pretty well. Here again, looking at the blemishes, Beautify 4.0 smooths them out, but not her entire face. So if we look here at this part, it smooths out the blemishes, but the rest of the face still has detail. You can still see contour lines. We can run it again and show you. मैं नहीं खरीदने वाला यार। IP rating नहीं है। Processor Snapdragon 636 है। This algorithm is when it can recognize in great detail different parts of any image. Similarly, Beautify 4.0 works really well on eyebrows. और कैसे यार ऐसे बार-बार तो हंस रहा हूँ, पागल हो गया मैं। Because they're applying a single filter, they smooth out all the details and your eyebrows come out blurred. Whereas the लग तो ऐसे रहा है अभिमन्यु रात भर प्रैक्टिस की है इसने। And unlike simple filters, with Beautify 4.0, we can make your lips look even more natural with a beautiful rosy tint. So I was talking about the tens of thousands of photos that we use to tune this here in India. And all of you know what a bindi is. But typically, these algorithms are not trained on Indian photos. And so something as simple as a bindi might look like a blemish which should be removed by your Beautify algorithm. And actually, we've seen a lot of phones that do that. So with Beautify 4.0, we can recognize the beauty on the forehead, the bindi on the forehead, and intelligently beautify the rest of the image. This also works really well with nose pins. भैया पागल बना दिया इसने तो, सही बात है यार, थक गया मैं इसको देख के। दिखाई जा रहा है यार, फोटो में दिखाई जा रहा है, प्राइस को और बताएगा। I think this one is also quite interesting. So because we trained this on faces of Indian men, we were able to tune it to preserve details of facial hair as well. So again, if you look at the typical algorithm, there's no detail in the beard. But if you compare it with Beautify 4.0, you can see individual details, hairs on his beard. So I'd like to give a big shout out to our dedicated camera tuning team here in India. They're the ones who made sure that the Redmi Note 5 Pro camera is top-notch. If any of you have been to our office over the last few months, you see some of these folks walking everywhere, taking photos in all different kinds of conditions. प्राइस And I'm बताओ। really घर यार proud अभिमन्यु to say मेरा that है their जीटीबी hard नगर work के पास, और paid off. प्राइस This ऐसा है कि camera is इसका awesome. प्राइस अभी बताएंगे। So that is the camera. It's the amazing portrait mode on both the front and the rear
powered by our AI-based algorithms. जी दोनों It's a साइड dual पोर्ट्रेट मोड camera मिलता है जी. with 20 megapixel on the front and Beautify 4.0 on both the front and rear. It's a perfect portrait. And as I mentioned earlier, I honestly believe that this is the best camera we've ever shipped in a phone here. It really is India's camera beast. India's camera beast. So we have one more AI-based feature to show you. Face unlock. And that's face unlock. There's a face unlock. Face unlock. किसको चाहिए face unlock? So this is the first time we've ever released face unlock here in India, and it's actually faster than a fingerprint reader. It's pretty cool. So our face detection algorithm scans facial features in roughly 500 milliseconds using a high accuracy AI-based facial recognition unlock. And face unlock is coming soon. ये मार्च के एंड में आएगा भाई, OTA अपडेट के साथ अभी नहीं आया, ठीक है? All right. भाई मेरे को खुद नहीं पता तुषार. सच में कैमरा. So we did some comparison to phones around this performance. And it's important to price note देख लो जी, Redmi Note 5 Pro why आ we गया. pick these phones out is that you can't find this kind of performance until you go up to phones of this price. And Redmi Note 5 Pro, it has everything. It has the flagship grade performance from the Cryo cores, 6 gigabytes of RAM, and that RAM is fast. LPDDR4X RAM, which actually the Galaxy S8 doesn't even have. And my personal favorite, it has a 4,000 mAh battery. You cannot get this kind of performance in a phone with a battery like this. If you use any of these phones, you will inevitably run out of battery, and that does not happen with Redmi Note 5 Pro. And then the camera is great. The dual camera on the rear and 20 megapixel front camera. अच्छा है. So we have two versions. The 6 gigabyte version with 64 gigabytes of internal storage is 6 GB रैम का वर्जन का प्राइस है 17,000. 16,999. कैसा लगा प्राइस? Again, this phone, I think if you were to compare the features, you will not find a phone anywhere like this until you get up to 35, 40,000 bucks. We also have a 4 gigabyte version with 64 gigabytes of internal storage. Again, DDR4X RAM, and the price of that is 14,000. Great. So that's two phones today. चलो यार बहुत होगी लाइव में, अब लाइव करते हैं खत्म. लाइव में हो गया सब कुछ, भांडा फूट गया है. एक 17,000 का है, एक आ रहा है 14,000 का 4GB वाला. तो अभी मैं जाता हूँ, जल्दी से वीडियो आपके लिए शूट करता हूँ और अपने ओपिनियन आपके लिए लेकर आता हूँ. तो वीडियो के लिए रहो स्टे ट्यून्ड. आई थिंक वीडियो आपको मिल जाएगी 3 बजे तक मेरे हिसाब से, तो वेट करो. जल्दी भी मिल सकती है, जैसे भी है मैं आपको नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, तो देख लेना, ठीक है? प्राइस इज ऑसम, फोन इज ऑसम, बट Redmi Note 5 को भूल जाओ. बट मैं बता दूंगा आपको वीडियो में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जल्दी से मिलता हूँ. चलो अभी लाइव को खत्म करते हैं. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. Flagship grade performance, 4 gigabytes of super fast